से कंट्रोलर कनेक्ट कर लें। Cover more choices, so if it's not available, जहाँ मैं वो आपको कराऊँ। यहाँ तो वो हम लोग कहाँ पे थे पहले? आर्क ऑफ द स्ट्राइक एंड ये we have a hypothesis that someone is sabotaging arcs around the eclipse but not enough information to pursue anything concrete. On the herd for more devices and hopes that we can find some thread to pull that can not okay. बट ये किसमें कहाँ पे वो वाली आग को हराना पड़ेगा, ऐसा है क्या? यहीं पे तो था ना, मैं कहाँ हेलो राइस में था, कहीं तो था। अब कल याद था मुझे, याद तो था।
ये कहाँ पे आ गए हम? अबे ये टॉनिक था यार। अबे ले टॉनिक नीचे चला गया। ले ये देखो साले को, आपस में ही लड़ रहे हैं भाई ये लोग। ये साला कैसा गेम डिजाइनर है भाई इसका। वो देखो आपस में ही लड़े वहां हैं। वो देखो ये ले, मैं भी मारू इसका इससे। जो आपस में ही लड़े वहां हैं। अरे यहाँ से ना हमें कहाँ जाना चाहिए होता है, हमें निकलना चाहिए यार। तुम हम यहाँ कर रहे हैं। ये कौन है भाई? सोते रहना चाहिए। अबे तेरी बहन। The surge clearly hit everyone hard. Still, what are you? ये है, ये कौन मार रहा है? ये उधर जाना है ना। यार ये एक बटन था इसमें कीबोर्ड में था नीचे जाने का। अरे छोड़ दे मेरे लाल।
वो कहाँ गया? आर्क। I अरे got रे you. यार।
बटन दबा दिया था भाई मैंने। That statue kind of looks like you, Arya. Could it be My mother, Sharia. I knew she was a celebrated weaver before the surge, but this... your mother has a statue here? I suppose she does. अबे यार निकल ही गया था भाई। मैं हेल्थ कहाँ से लाऊं इस पॉइंट पे? भाई हेल्थ चाहिए यार। Can we halt brother please? Can we halt? अरे यार इसके सारे चूजे भी आ गए। I've got you. मरना नहीं था यार। कहाँ गए हम? फिर से वहीं पे आ गए क्या? अब वो आर्क कहाँ गई? वहीं तो नहीं आए, कहीं और उतरे हैं हम। कहाँ पे हैं हम? रिवर्स साइड। वो कहाँ है? आर्क बड़ा सा अपने खोपड़ी पे आग लेके घूम रहा होगा। ये कौन है? ये लेकिन इससे ऐसे नहीं लड़ पाऊंगा यार। लड़ने के लिए मुझे चाहिए होगा पहले हेल्थ, जो मुझे यहाँ मिल जानी चाहिए।
I've got you. Bro is again he's stuck. भाई ये कैसा NPC है भाई ये struggling. Come on brother, yes, come on. Come on. Bro is struggling. Bro.
Bro is hurt. Bro is hurt. Okay, I was hurt. Okay. Where is that guy? Where is the ark? यहीं पे तो मिली थी लास्ट टाइम. वो अपने आप को ही मान लेता है कि
What? Ooh, it's not. A flame strand. Can always do with a little heat. जय हो महाराज, क्या बात है, क्या क्या दिए हो? Sorry bro, I had to kill you. You were a great opponent. I had to kill you. But it is a blind yes. यार तो इसको मारना तो फिर तुम्हारे लिए मतलब कुछ हुआ ही नहीं। Another. ये ढूंढने हैं यार कौन डिवाइस। अबे ये ढूंढना है हमको, डिवाइस ढूंढने हैं सारे। हमें ऐसे मिलेंगे नहीं, हमें ढूंढना पड़ेगा, इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। एक यहाँ पे मिला हमें अंदर, तो इसके अंदर जाके और मिलेगा। दो और ढूंढने हैं ना, ये क्या सीन है? The Smith's Guide called for an assembly to elect a new councillor. हाँ तो सीधी सी बात है, जहाँ अपोनेंट होगा वहीं पे ये सब चीजें देंगे, है ना? अबे Hold on. लौड़ा
Another tampered arc. I've got you. बस मोमेंट पे चला। अबे यार मेरे पास रिसोर्सेज थे भाई बहुत यार। Bryn, Sev and I have been digging into the devices you recovered, and we've developed a working theory. We'll test it against the ones you found in the field. What have we found? That I am a very great fool. He is not a fool. I am. Hours trying to unravel the complex enchantments in each of these devices. And Sev here, paragon of clarity, points out a single point of commonality so mundane I had ignored it. It's a team effort every time, Dom. What did you two discover? What our keen-eyed friend spotted was a singular mark etched into each device. A maker's sigil.
We used them in Tarza to lay claim to a craft work. बोलूं ये कैसा गेम है They're certified to each भाई एक नंबर गेम है and I will... Meaning this mark could be registered in public record. The spire is a logical बैठ के place. देखो तो मजा आएगा भाई Nothing comes सही गेम है rich and powerful like bureaucracy. That's where I'll start looking then. Search the records in the spire in Upper Denevron for the owner of a maker's sigil. Upper Denevron ये क्या है ये दिखा रहा है फ्लेम पावर्स भी आएंगी Damn bro Bondu means friend yes I know यार इसको अपग्रेड करने के लिए ना ये देखो ये मिलेगा एम्बर सर्वेंट अरे बहन चुप अपना वो छोड़ सकता हूँ अपना बच्चा छोड़ सकता हूँ भाई लड़ने के लिए वो लड़ेगा नाइस आई विल डू इट लेटर आर्क ऑफ द अच्छा चीज जो आर्क को भी हमने हराया है उसकी पावर मिली है अकॉर्डिंग एवरीवन चलते हैं ठीक है यहाँ में कहाँ जाना है एक मिनट ये वाला है ना सर्च द रिकॉर्ड्स इन द स्पायर अकॉर्डिंग एवरीवन में दी है द स्पायर है ना हाँ हाँ तो ये वाले में चलते हैं रिवर्स साइड क्या हाल है भाई लेवल अप क्या कर रहे हो वैलोरेंट खेल लिया क्या डायरेक्ट एक्स 12 है तो इसको तो हाँ वेलो तो अरे ये ऐसा इतना एनहांस्ड गेम नहीं है यार बस गेम लाइक थोड़ा सही गेम है एज इन कैसे बताऊं यार मैं स्टोरी गेम जो होते हैं ना जैसे वैसा है ये बस अभी हम बस फटाफट वॉक थ्रू कर रहे हैं कंप्लीट करना भी है गेम बट इतना एनहांस्ड ग्राफिक नहीं है लेकिन हाँ स्टोरी वगैरह सही है क्या स्टोरी है मॉन्स्टर हंटिंग टाइप का स्पायर पहुंच गए हम हाँ पहुंच गए ना स्पायर अबे ये कहाँ आ गया अरे भाई साहब ऐसे करोगे क्या किसी और को जीने नहीं दोगे हैं इधर आओ बहन के दो
एल्डन रिंग का 2D वर्जन बट 3D। अरे एल्डन रिंग नहीं है, एल्डन रिंग टाइप का नहीं है भाई ये। एल्डन रिंग से काफी डिफरेंट है। एल्डन रिंग तो खेल रखा है। मुझे वैसा लग रहा एल्डन रिंग जैसा। ओके, एल्डन रिंग के ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं भाई। अब यहाँ क्या करना है? सर्च फॉर द रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे सर्च करूँ मैं हैंड के लंडों फॉलो, ऐसा मुझे ऑब्जेक्टिव देते हो। अच्छा, लड़ना उड़ना नहीं है भाई मुझे। फुल वॉक थ्रू मारेंगे, लड़े उड़ेंगे, लड़ने में टाइम वेस्ट नहीं। ये क्या, कहाँ से चला? सर आप भाग यहाँ से, नीचे भाग, जाने नीचे जा, मार सा। ये सब नहीं है ना एल्डन रिंग में, ये सप्लाईज कलेक्ट करना और ये सब करना, ये सब नहीं है एल्डन रिंग में बस। नीचे गिर गया। यहाँ कोई है नहीं रखवाली? ये है ना रखवाली का। साला देख लिया क्या? देख लिया। ए पट्टा, इधर आ, इधर आ, ए इधर आ। शील्ड हटा, शील्ड हटा, शील्ड हटा दे, शील्ड हटा दे। इधर आ, इधर आ। शील्ड हटा, शील्ड हटा, शील्ड हटा, शील्ड हटा बेटे। साला शील्ड नहीं हटा रहा, भोसड़ पप्पू तेरी गांड। हटा हटा हटा। बहन के लौड़े आ जा, लड़ाई करेगा? आ बहन, बहन के लड़ने लड़ाई करेगा? आजा 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 आजा। फिर मार बहन के लौड़ा, दम नहीं है क्या? मार साले। अरे दे दे, निकाल दे। हाँ साले, आ गया ना हाथ में। चल निकल यहाँ से, छूती है। यार तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम इधर आ गए तो ये तो मैप जो स्पायर रहा ही नहीं, फिर ये तो अलग मैप चला गया ना, फिर हमें इधर नहीं आना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। गलत कर रहे हैं हम शायद। गलत गलत गलत, समथिंग वाज नॉट राइट।
अरे बहन जो ए बहुत सड़क। और तुम्हारी माँ का चूड़ी भोसड़ी वाला बदला ले रहे हो वहां पे छोड़। अरे भाई ये मैं कहाँ कूद गया यार, पहले ही करना था ना, फिर आगे साले, फिर मैं यहीं पे आ गया। अबे वो कैसे आया? ए ये कहाँ से कूद के आया है? अबे क्या मजाक कर रहे हो क्या बे? सालो कहाँ से कूद के आ रहे हो? अबे वो फिर आ गया। ओ सही। ले बनके। भाई वो फिर कूद कूद के आ गया था वो फिर। एनपीसी भी दिमाग लगा लेता है आखिर में। अरे यार एक मिनट। कब मरेगा ये? इतना हिट खा लिया।
धन का धन मर ही नहीं रहा। ये देखो अब हम यहाँ पे है ना, अभी हम यहाँ ये पे हाँ स्टेप्स पे हमें जाना है ऊपर है क्या ये चीज, ऊपर से जाना पड़ेगा। Aspire. Region discovered. ये कौन है? क्या भैया? A loom gate near the spire. Probably for the Enclave's council members. Might not be one myself, but I'd better grab a key swatch. भाई देखो उधर जाओ नहीं, कैंप फायर बिठाए हुए हैं, फालतू उधर जाके अपना वो नहीं करना है। लेकिन साला जो हमें चाहिए वो वहीं छुपाया होगा पक्का। यही तो इन गेम्स की ये बकचोदी है, वहीं छुपाया होगा पक्की बात है। यहाँ पे बंदे हैं। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल अबे ये कौन आता है? लोग भी देख लिए। ये
भाई ये तो मैंने तो नहीं सारे रिसोर्सेज भी तक चुपचाप चलो वापस और हम आते हैं कल प्राण सारे सारे जूजू ये जूजू बड़े खतरनाक है। खाना खाना है यार अभी हो जाए। साला ये ठंडा नहीं होगा क्या कभी? ये तो ठंडा ही नहीं हो रहा भैया। थोड़ा यार इस पे लड़ने का कोई फायदा नहीं है भाई इन लोगों से।
अंदर बताना है यार. A lot of damage this high up. Use a minion with target mode that will move, fight, and distract foes. If the minion takes too much damage, servant becomes similarly explosive shortly after being infected by infected. Prepare to stand board. I'd always heard the Enclave liked to keep extensive records. It's a lawkeeper's dream. Let's see if we can find a registry of Maker's sigils. This looks like some kind of evacuation plan. Doing their research before enacting asylum, I'd wager.
Tables with assets listed. Looks like a tabulation of supply levels. Coordination for the runners and haulers. They remained in the city for years after the surge, according to these dates. Until they enacted asylum, at any rate. Just some birth records. Surprisingly detailed. Invaluable. We'll have to make sure Lane adds them to our archive later. Helped him out of his misery. Here we go. Sigils. Ah, found it. Our creator is listed here as Lucia de Crassus. 2 registered workshops, both council approved for dangerous materials. She must have had some pull before the surge. One is here in the city, and the other, let's see. I've been there. That frozen town out in Dredger's Mire. Better wear something warm. I think it's important we run this one down, Bryn. The water clock is dripping. Impressive building. Wonder what's inside. Search Lucia's workshop in AVM down. First rest. AVM कहाँ पे है? ये अपर डायग्राम था ना? हाँ तो यहाँ पे तो हमारा कोई काम ही नहीं है. यहाँ का काम होगा ना? Back in the spire.
Let's see if we can find a registry of Maker's sigils. ये वो मैं कहाँ जाना है और करना है Lord in Nvme Viewers Rest. Okay. Viewers Rest किधर है चलो देखते हैं पहले अबे यार was registered to our enchantress of interest, Lucia. It sure doesn't look like a saboteur or smuggler's den. Do it.
दूसरे का मरते ही तो नहीं है ना। चूहे भाग मार ले, कई चीज चला ले सब। अब तो मरे। इधर 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 भाई इसकी मौत नहीं हो गई साला। ये भाई मजा आ रहा है भाई, वो मर ही नहीं रहा है यार। On the workings of Archons by L. de Crassus. Seems promising. Dom? Certainly topical. Probably not enough to go on by itself, though. Still significant. मिल गया सामान। अब एक और सामान मिल गया ना। अब बॉर्डर बेलियन ड्रेजेस मार जाना है हमें। चलो अब दूसरी जगह जाना है, यहाँ का काम हो गया हमारा। ड्रेजर्स मायर में बॉर्डर वेल। ओके इधर है पोल्डर वेल के सामने इधर। अभी यार जरा सारे भाई यार इसमें जाना है भाई। तो इसके अंदर हेल्थ जाएगी भाई बहुत गंदे तरीके से, पता है। अब जाना पड़ेगा ही, कोई बात नहीं, चलते हैं। भाग मिठा भाग। That aerolith can influence the weather. Almost certainly why things are frozen over. Malfunctioning then. Indisputably. The ice buildup must be causing a cyclical localized reaction. Sure. I'll take care of it. Good idea. Zombie environs and intense cold is bad even for enclave parchment. Best to lower the risk. बहन चो, गर्म से भी एलर्जी है, ठंडे से भी एलर्जी है, तो क्या करे आदमी। अबे भाई खत्म हो गई, मेरे पास हेल्थ खत्म हो गई। खत्म हो गया। भाई हेल्थ ही खत्म हो गई। अबे ये तो गड़बड़ स्टेज है भाई, ये तो गड़बड़ है भाई। अंदर कैसे करेंगे सब।
दिस इज अ रिडल। या तो पहले डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी सारी आइस, उसके बाद जाना पड़ेगा अंदर, है ना। इसकी सारी आइस, जितनी भी आइस है सबको तोड़ना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा या तो। अरे ये साले भोसड़ी के कीड़े साले। भाई देखो, सीधी सी बात ये है कि अब इधर जाने के लिए देखो 3 टॉनिक है अपने पास। पीछे से इधर से कोई रास्ता दिख नहीं रहा है मुझे। उधर तो भाई बंधु खड़े हुए हैं। देखो भाई बंधु, यहाँ से चलते हैं, देखें अगर भाई बंधु अगर इधर से, भाई बंधु इधर तो बहुत गंदे हैं क्रिस्टल्स। अच्छा, मैं ये क्रिस्टल्स ऐसे भी फोड़ सकता हूँ? नहीं यार, क्रिस्टल्स थोड़ी ना आ रहे हैं, बाकी चीजें आ रही हैं। मेन वाला क्रिस्टल आ ही नहीं रहा। अबे अब मरा वो वाला क्रिस्टल। हाँ हाँ हाँ। अबे नहीं यार, अभी नहीं। सारा ये तोड़ने हैं क्या? यही काम बचा है। यार ये तो अगर सब भी तोड़ दूंगा मैं तब भी वो साला वो ठंडा तो जा ही नहीं रहा है वहां से। जब तक ठंडा वाला नहीं जाएगा तब तक। ये कौन है? भोसड़ की ये कौन सी परछाई किस चीज की आई थी अभी? मुझे लगा वो पंछी आ गया फिर से। इधर अगर मैं जाऊंगा अंदर तो मैं पहला जाऊंगा। यार नहीं ये कैसा? कौन है भाई ये? अबे कौन? ये मादरचोद, ये मादरचोद। भाई तुमसे कौन लड़ने आ गया? भाई इसको किसने बुलाया? इसको किसने बुलाया? मादरचोद, मादरचोद, मादरचोद। अबे ये कहाँ भगा दिया भाई? भाई मैं उसको कैसे मारूंगा? मेरे पास औजार ही नहीं है उसको मारने के लिए। मैं तो अपना यहाँ आइस डिस्ट्रॉय करने आया था। तभी मैं कहूँ यार, मैं बोल रहा था भाई आवाज आ रही है कहीं से, यही आवाज आ रही थी यार। जा यार तू जा भाई, तेरे से नहीं लड़ना है मुझे। दूसरी आग वाग फेंक देगा। वहाँ देखो हीरो, इसमें टॉमी कॉमिक सब मौजूद है इसमें।
तो यहाँ है ना। आग ही नहीं है कहीं पे, नहीं आग हो तो जगह बनाई जाए फिर से। नहीं हो गई। उसकी तो कहाँ से आया, कहाँ से? That error can influence the weather. Almost certainly by things that are frozen over. Malfunctioning then. Indisputably. The ice buildup must be causing a significant reaction. I'll take care of it. Good idea. Swampy environs and intense cold is bad even for enclave parchment. Best to lower the risk. I fully you. Brace for it. अब आगे लड़ लो बहुत बड़ी चैलेंज है। वहाँ चुपचाप हम जा रहे हैं, बहुत बड़ी कहाँ है ये बिजली वाली। चुपचाप मैं जा रहा हूँ अपना काम करने, तो वहां पे नहीं जाने, नहीं जाऊंगा इधर से। जाओ, मैं चुपचाप मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। अब किसी ने अगर गांड मराई, बता दे रहा हूँ, तो गांड फाड़ दूंगा, बता दे रहा हूँ। तो आगे नहीं जा सकते। चलिए अभी आगे चलता हूँ, अभी सांस मिलेगा अपने जरूरत में बस करना। काले 4 बिल्डर भी बैठे हुए हैं। अरे यार, पहले यहाँ की सप्लाई लूट लेते हैं। ये वहां से कहाँ नीचे जा रहा है?
अब इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकते। ओह जोनाथन बचान। इधर से ही जाना है भाई, ऊपर ऊपर से रास्ता सब कैंसिल आउट होता है। और उधर से नीचे वहां पे क्या था, वहां पे हो सकता है आइस डिस्ट्रॉय करने का वे, वहां तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं ये करके जाऊं तो क्या मुझे डैमेज लगेगा? लग रहा है लगेगा। मुझे तो टॉनिक चाहिए, टॉनिक के बगैर तो हो ही नहीं सकता ये चीज, इम्पॉसिबल है भाई। विदाउट टॉनिक कैसे होगा? विदाउट टॉनिक तो नहीं हो सकता। टॉनिक पहले कलेक्ट करना पड़ेगा तब आना पड़ेगा। कोई अच्छा चीज नहीं पड़ी हुई है यहाँ पे, मैं तोड़ के ले लूँ यार थोड़ा सा। कुछ है ही नहीं यार वहाँ, तो गलत है भाई। टॉनिक कहाँ से मिलेगा? टॉनिक नहीं मिलेगा तो कहाँ से करेंगे फिर? टॉनिक तो होगा। ये देखो साले आ गए। इनके लिए मैं क्या करूँगा, इनके लिए ही तो मुझे वो नया वाला वो मिला है। ये के लिए मैं ये डालूंगा। मार बेटे मार, मार बेटे मारे। वाह वाह मेरा लाल, क्या बात है। वाह मेरा लाल, और मजे में हो? क्या हुआ? भोसड़ी के भोसड़ी, भोसड़ी, क्या एकदम क्या वही हो क्या? हमारे गुलाम हो मेरे यहाँ। और ये कहाँ जा रहा है? वाह देखो, सबको भेज दूंगा, जो सब जाओ उससे लड़ने, कहाँ जाओ उससे लड़ने। इधर जाना चुकी हाँ, तो 3 और बना रहे भाई। यहाँ मत खड़ा रहे चूतिए, क्या आपसे लड़। अरे बात, बहुत बुरा मरा बेचारा। मेरे ख्याल से उस ड्रैगन से लड़ना ही पड़ेगा, ऐसा है क्या? दिक्कत यह है कि उस ड्रैगन को मैं बिना बो के मार नहीं पाऊंगा, और बो मेरे को कंट्रोलर से चलानी आती नहीं है। ये दिक्कत है बस, आगे और कोई दिक्कत नहीं। ओ देखो कहर मचाए।
आग मुँहते है वो उसके। पहले चलते हैं, वो वाली सप्लाई लेते हैं चुपचाप। मैं ही जानता हूँ भाई कैसे बचाऊं। अच्छा बंचो, एक ही जाएगा अभी, एक टाइम पे एक ही जाएगा। ये देखो लड़ाई हो रही है। मार बेटे मार, बेटे मार, बेटे मार, वो मेरे पास आ रहा है। दूसरे वाले को देखो मजा ले रहा। दूसरा वाला खाली मजा ले रहा है। गांड फाड़ दे बेटा, बहुत अच्छा। एक और तमाचा मार, मार दे गांड फाड़ दे, गांड फाड़ दे, बस गांड फाड़ दे इसकी, गांड फाड़ दे, गांड फाड़ दे। हाँ बस, हाँ गुड बॉय। गड़बड़ ये है, अगर मैं विस्फोट भी कर दूं तब भी नहीं ये आइस जा रही है भाई। ये आइस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, समझे? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम चलते हैं ऊपर। मेरे पास एक प्लान है, प्यारा सा एक प्लान है मेरे पास। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। पहले हम चलेंगे उधर, अपने प्यारी सी जगह पे चलो पहले। वो पेड़ के पास, वाला पेड़ कहाँ है? ठीक है, ये पेड़ आ गया ना। अबे बीच में इतनी मशाल कैसी जल रही है? तो फिर मतलब बीच में सही होगा, मशाल जल रही है ना ये, देखो बीच में सही होना चाहिए यार फिर। हाँ आग लगी हुई है देखो, तो बीच में तो सही होना चाहिए।
वो देखो वो उस जगह पे। एक प्लान कर सकते हैं हम, अगर हम वीवर बना के ठीक है, अब इस वीवर को ग्रास में लेके इधर आओ, तुम जाओ वहां पे, वो देखो ठीक है ना। ऐसे अगर मैं डायरेक्ट वहां पे छोड़ना है, ले हो घोसड़े वहीं चूट गया चूट गया। चलो डायरेक्ट काम करते हैं पहले यहाँ से, ठीक है। ये लगा दिया, ग्रास लगाओ, इसको फेंको, ये वो वाले पे ये उधर क्यों नहीं जा रहा है? लेना तो कम ही नहीं हो रहा भाई, उसके स्पोर्ट करना है, हो ही नहीं पा रहा है फिर से। I've got you. अरे राम भाई,
मतलब जहाँ पे वो आग रहेगी वहाँ पे नहीं बनेगी ना बर्फ, यही तो मतलब हुआ। तो जब मैंने आग अगर वहाँ फेंकी तो वहाँ नहीं होनी चाहिए बर्फ। अरे यार। अरे यार वो आग फेंक दी भाई ने, गड़बड़ हो गई। Hold on. मैंने आग आग के पास पास में रहना है मुझे। ठीक है, इसीलिए आग बनी हुई है वहाँ पे। चेक पॉइंट्स हैं वो टाइप के, माइलस्टोन्स टाइप के। में कुछ है। चूतिया भाग क्या फंस गया वहाँ। अब हाँ। ठीक है भाई। क्या एक खत्म हुआ, एक स्ट्रेटेजी चली काम। और ये एक और है। लेकिन इसको तोड़ने के लिए अपन को पहले जाना पड़ेगा। पर कैसे चलेंगे यार? गाड़ मार दे बेटा, गाड़ मार देना बहुत।
अबे यार एक तो ये इसको मेरे पास ये सोचा हुआ हो गया। अबे भाई ये यार कंप्लीट कर दिया फिर सोता हूँ, हो ही नहीं पा रहा है। एक तरीका निकल तो गया लेकिन चला अरे यहाँ पे टॉनिक की कर गई इसकी टॉनिक ही नहीं है। और देखो और क्या काम हो रहा है। सोते हैं भाई सोते हैं। हाँ इसमें जाना है तो तुम्हारा हाल क्या ये लवली तो रुक बेटा रुक बेटा रुक साले Hold on. साला मसाल के पास कोई कुत्ता घूम रहा है। भाई कैसी पहेली में फंसा दिया है मुझे ये बताओ। ये सारा सीधा साधा गेम नहीं हो पा रहा। भाग रे लौड़े भाग। लंगड़ा हाँ और लंगड़ा ले लड़ा वही क्या लगा पंजा नागिन पंजा। अच्छा बस अब यहाँ पे एक अपना सर्वेंट डालो फट से। जा बेटे जा जा लड़ाई कर। तैयार रखो भाई दूसरा है डिमोलिश करने के लिए। अबे अबे भाई ये क्या है ये साला ये मिनियन भयंकर नहीं लगता क्यों नहीं लगता है। Hold on, hold on.
रास्ता है नहीं मेरे ख्याल से। तो साला टॉनिक नहीं है ना यार, अपने पास टॉनिक हो तो जाने में सेंस भी बने अंदर, टॉनिक ही नहीं बच रहा है बस। अंदर कहाँ से करेगा, उसके पास टॉनिक ही नहीं है तो एक लाइट इधर रास्ता ये दिख रहा है। चलो भाई चलो। एक आग वो लगी हुई है, उधर गई वो तार जाके तोड़ने। चलेगा मेरे लिए। अबे तो इसको उसको बुला के मत लाना है। अबे साला उसको बुला के ले आएगा यहाँ। कुछ हो ही नहीं इसके क्रिस्टल कोर्स वाले को। ये कौन सा क्रिस्टल है भाई यहाँ पे? अरे यार हेल्थ मिलेगी तब तो करेंगे, नहीं तो कहाँ से करेंगे भाई। बहुत गड़बड़ फंस रहा है वैसे। वहां पे जो हमने वो तोड़ दिया था, अबे वही वाला वो वाला तोड़ना है Hold ऊपर। on, hold on. एक बड़ी टिपिकल जगह पे है।
तो आग से गोले से फूट गया। ये वाला आग का गोला जो है एक्सप्लोड नहीं करेगा। इससे क्या होगा? दिक्कत ये है ना, उधर जाए बिना नहीं हो सकता, जाए बिना कैसे करूँगा? भी नहीं फूट रहा। चालीस कदम कुछ हो ही नहीं रहा इससे। साला बच्चा कुछ काम करे। ये मैंने जैसे हटाया वैसे यहाँ पे भी मौत हो जाएगी मेरी। साला गलत फंसा रहे हो। बहुत गलत फंसा रहे हो। वैसे नहीं होता, गलत क्या करना। ये पूरा नहीं तो समझ में आता है। कल हमने यहाँ वाला क्रिस्टल ट्राई किया, फिर भी मतलब कुछ नहीं बना उसका। मतलब वहाँ पे जगह नहीं बनी, वहाँ नीचे जगह बन जाती तो एटलीस्ट वहाँ खड़े होकर कुछ करने का होता है यार। जगह ही नहीं बन पा रही है जगह। तीर से तो नहीं तोड़ना है कहीं, लेकिन तीर से भी कैसे टूटेगा भाई, वो दिख ही नहीं रहा है अभी। दिख ही नहीं रहा है क्रिस्टल। कहाँ है वो? ये है क्या क्रिस्टल? वो अगर डैमेज दिखाए तभी होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। जा बेटे वो तोड़ के आ जा।
बन तो रही है जगह यार, लेकिन वो उसको तोड़ना पड़ेगा प्रॉपरली। खोपड़ी वाला सेल्फ हार्म कर रहा है। यार इतना टफ क्यों पड़ रहा है पता है, क्योंकि ये सारा ये दोनों यूटिल जो है ना एक साथ जा नहीं रही है फटाफट। और मैं ये लगाता हूँ तुरंत ऊपर नहीं जा रही है ना। ऊपर नहीं जा रहा है यार ये। वहीं फंस जा रहा है। ये तो डैमेज लग रहा है। ऐसे ही होगा भाई, डैमेज थोड़ा थोड़ा दे के हो गया। भाई साहब फाइनली सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए मैंने Already warming up. वो कर दिया। Hope I didn't damage the priceless artifact too much. Can't make an omelette, as they say. पूरी दुनिया का भला कर दिया भैया, नहीं तो सब मर रहे There are थे। notes here. Water damage from the cold and melt, though. Let's see. Materials. Huh. That's how you visualize a pattern. Lots of marginal notes. These have to be from Lucia. Ah, she mentions a flood in the later passages. Zev and I will look at these together with her book then. See what we can learn in context. As Aurea says, candle is burning on our flood problem. Consult with Tom about the recovered information। और हो गया ना, हमारे यहाँ का काम हो गया। अब यहाँ से चलो, हमसे बात करो, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है। Any luck with the materials we gathered from Lucia's workshops? Yes. I'll let Sev fill you in. We started with the book, which was painfully dry and highly theoretical. Unsurprising. The Enclave was notoriously tight-lipped about the construction of the arcs. The book was still useful, as it contained a number of craft-specific terms, shorthands and annotations, all critical. Referencing the book clarified the notes. Without it, they bordered on deranged rant, especially at the end. Sort of a window into her thinking. We suspect Lucia spent a long time in isolation while working on these. She covered many topics, but the most prominent
was her work into the flood. I'm sure her work was interesting. But eyes on the prize, gentlemen. What did we learn about the floods? Does she have an answer for us? Partially. This is the design. Her research led her to one conclusion. To stop the floods, she needed to disrupt the This confirms our theory from earlier. She's talking about the barrier established by Asylum. Her design is detailed and specific. The device it would create inverts the flow of magic in enchanted objects, disrupting them for a time. We think the devices we found on the Arks were prototypes, small experiments to determine efficacy and duration. So what's the catch? If the floods are still happening, clearly she didn't build one. Lucia's thimble, as she calls it, requires some highly... It has to withstand considerable magical flow. Far more than what's produced by... It's like how mass scales exponentially. Just because you can build a scale model of an aqueduct doesn't mean the real thing can support its own weight. Thankfully, that supply cache you found has the necessary materials to handle that kind of magic. Solar can pick up where Lucia left off then. Exactly. The other thing we'll need is a source of magical flame. Solar's mantle won't be enough by itself. I can handle that part easily. Okay, so we have clear next steps. Just one more thing. The flood. Our best guess, at any rate. There's no sign. All right. Let's go over everything we know so far. We know that, for a time after the surge, civilians continued to live in Tenebron until they were forced to evacuate the city. We're still not sure the cause. Wherever the Hearthsiders went, they're still actively sending scouting groups to scavenge for supplies. From the uniform, the creeper who was watching Bryn sleep belongs to one of these groups. We also know that a defensive procedure codenamed Asylum sealed access to the Enclave underground. This was done using a barrier almost exactly like the Veil. Lucia, an ex-high enchantress, opposed Asylum and began working on ways to sabotage it. Her research forecasted that the barrier would cause the Enclave to flood with miasma. The very same flood that seems to have killed Lucia before she was able to finish her thimble. But we have her design. It could disrupt Asylum's barrier. So Lucia's thimble is the key to our survival. It's less a key and more like a magical battering ram. Whatever works. What is it, Lane? It's just... I've pored over all the documents we've compiled, and a concrete link between the evacuation plan and the underground is nowhere to be found. I can't shake the feeling we're missing something. The Enclave destroyed a lot of information from their documents. Could that be why you can't find a link between Asylum and the evacuation? I considered that. The Enclave may have hidden their location from Lucia. Being a weaver isn't about being certain all the time. It's about taking calculated risks to carve a path forward. And regardless of the Hearthsider's location, disrupting the barrier is the only option to stop the flood. You're right. I just hope that if we did miss something, it doesn't come back to bite us. Even if it does, we will handle it. That settles it. Bryn, it's time to use the thimble. Thank you for your help with that, Bryn. You've a deft hand for flame magic. You can wear Sev's apprentice hat for one day. Also, Lucia knew what she was doing. This thimble was clearly designed to pair seamlessly with Enclave constructions.
Must be her experience as a high enchantress at work. Based on Lucia's notes and what we discovered at the Bastion, this was custom designed to disrupt Asylum's barrier. If it can stop the flood, we need to use it soon. Agreed. We don't know how... That console that looks like our scry should be the controls for the barrier. The thimble was built to interface with it. तो पूरा बंद था। भाई साहब ये क्या खुल गया ये कहाँ से खुल गया ओ भाई मुझे तो लगा था यार ये कुछ I owe you one. You need to come with me. All of you. ओ भाई ये तो सबको बुला रहा है Bro. Stands hold. ये लोग कौन है? We mustn't cause a panic. The eye. Sure. It's not like we had a dire supplies shortage on our hands before this happened. What do I tell the High Enchanter? The Guild will want... Enough. We won't discuss this further. Not in front of our guests. Identify yourselves. Harpane, or Silverbeak, as I'm known among Weaver circles. This is my band, and beside me is our acting point. Bryn. And you are? Khan Stunild, Eye of the Enclave. My colleagues are the Spindle and the Axle, representatives of the Enchanting and Crafting Guilds. Who sent you? Sent us? Taza? Renland? Udea? The Enclave is the envy of the Maida for its magical prowess. Clearly one of those nations has finally grown a spine and decided to take it for themselves in our moment of weakness. Moment? No one sent us. We came here by accident. What kind of fool do you take me for? You expect me to believe that you bypassed our veil, infiltrated our loom gates, and breached Asylum without a national power backing you? When you put it that way. This is a misunderstanding. We're Weavers, like you.
There was a brief opportunity to enter the Enclave for the first time in decades, and we took it. Everything we've done since we arrived has been to uncover what happened here after the Surge, and to find you. If that is true, have you really no inkling of the trouble you've caused? No. Your reckless conduct has unleashed an enemy that nearly destroyed us 27 years ago. The Surgeborn. They first appeared a little over a decade after the Veil went up. Where did they come from? No one knows. But they arrived in the Underworks before making their way to the surface. Where they left a trail of destruction in their wake and wreaked havoc on the Enclave. Causing casualties to rise. And so I called for a retreat here, saving countless lives. We sealed the Surgeborn in the Underworks for good. Until now. We've been here a little while now. Don't you think all of this could have been avoided if you'd properly said hello? She's right. This is hardly our fault. Look, Surgeborn or not, we had no choice but to remove the barrier. Though, I suppose we owe you thanks for warning us about the floods. Who warned you? You did. Did we? I'll deal with you later. While we can agree Arakim breached no-contact protocol, it has proven to be the right decision. The floods were growing worse, and now they have stopped. Even if fixing them has introduced a new problem. One my band would be more than happy to help you solve. Ha! Work together! Sorry to interrupt, but you mentioned your last name earlier. Any relation to Cherie and Harpine? She was my mother. You know— Of course! I mean, before my time, obviously. But she's still renowned in the Enchanting Guild. Her work is remarkable. There's a statue of her in Denevron, you know? Oh. I can't believe she didn't mention that. There is so much I'd love to ask you, but for now, Aurea comes from a long bloodline of outstanding and renowned weavers. Shouldn't that buy her band some grace? All right. Your presence in the outskirts will be tolerated. Nothing more. What about the Surgeborn? What about them? Shouldn't we work together to deal with them? We could use the help. The Surgeborn are a problem for anyone in the outskirts, not us. Cassidon's Hold is a fortress. The scouts do head into the outskirts to scavenge for supplies. We'll take our own precautions. Speaking of, we have pressing matters to attend. But Enough! My word is final. Bryn, the one that led us here is clearly the one that warned us. Try to talk to him before we leave. Maybe he's willing to work with us. Will do. Hey, Arakim, was it? oh, just call me Arik. Well, Arik, I never got a chance to thank you. You know, for grabbing me before I fell to my death. I think you had it. Besides, I couldn't let you plummet into a chasm. The Eye is pretty peeved with me, but hey, that's just a bonus. You seem awfully trusting of us, considering the terrible first impression we've made. I was spying on you the first time we met, so let's call it even. Sure. Maybe you know everything already then, but have you got any questions for me? Just one. Why are you here? Decades of war across the Maida followed after the Surge. Magic and Weavers were blamed for all of it. Without the Enclave as a stabilizing force, it's as if the world outside has splintered into factions,
divided by chaos and fear. Not to mention the lands surrounding the Veil are completely shrouded in tangles. I'm here to bring down the Veil and play a small part in restoring the Maida Basin to what it was before the Surge. Wow. That's a big picture vision. If that's truly what you want, then dealing with the Surgeborn is the first step. Ever since the Veil went up, our people have been in crisis. They've spent so long in it, they're afraid to do what it takes to get out. It doesn't help that some have benefited off that same crisis. Who? Who always benefits? The very top. Our leaders are too preoccupied with their own concerns to form a unified front against the Surgeborn. Such as? The Spindle is obsessed with getting the Arcs functional again. She believes that will help us regain control, and the Axle is too stressed about our supply shortage right now. But if their concerns were handled, they could pressure the Eye to finally address the Surgeborn. That sounds like an opportunity. And are you a representative yourself? Do you have sway? Representative, yes. Sway? No. I represent the Scouts, meaning I'm at the Scouts were once points like you, but our role has changed since the Veil went up. We were effectively drafted into scavenging for food and supplies. It made sense following the Surge, but it's been recently. We've even been separated from Cassidon's hold and the remaining civilians. Anyway, it's the guild leaders who will need to pressure Khan Stanild into dealing with the Surgeborn, which is what needs to happen before we can even think about tackling the Veil. Sounds like I've got some palms to grease. Yuck. But yes, I'll come by your camp later. We'll be able to speak more freely there. What is that about? The Eye isn't one for idle chit-chat. That's worth watching. Talk to you back at our camp. You got it. Sev, you all right? No. I mean, yes. I'm fine. You sure? Bryn, the rest of us are heading out. See you back at camp. I got to go. भाई एक बहुत बड़ा ये वो हो गया कंप्लीट इस गेम का एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हो गया एक्सेल है क्या बात करनी है तो कुछ बात करनी है क्या बात करके क्या मेंटेन बट क्लियरली ऑफ ये है ये इतने लोग हैं gates from arcs carefully labeled for test concerned with the spindle in Cassidon's hold. Concerned with the spindle. Excuse me, but Arakim mentioned you're the Spindle, a leading representative for the High Arcanists. Oh, yes, that's correct. We wanted to formally introduce ourselves. I'm Aurea, as you know. This is Dam, our enchanter, and Bryn, our acting point. We didn't catch your name earlier. Khan? Just call me Isla. Is there something I can help you with? We'd actually like to help you. Apparently you want to restore the Arcs. Shh! Not so loud. Sorry, that sounds wonderful, but the Eye won't be happy about us collaborating. Pooling resources and sharing knowledge is hardly a bad thing. Why would the Eye be It's complicated. I do want to fix the Arcs. More than anything. Okay. We'll try, but
forgive us of our excitement, pup. It's Dom. He's the one that might forget. We know that the arcs began malfunctioning after the surge. A select few were even sabotaged. Any idea on what caused the other malfunctions? Some theories, but nothing solid. Anyone who knew how to create arcs, let alone fix them, died before I was born. I've tinkered with an inactive arc that's lying near the Grand Gate, but it would make a world of difference if I could study a resonance that was freshly harvested from a... Consider it done. You sure about this, Bryn? I know you've defeated a great Archon before, but For our new friend? If you're sure, I certainly would appreciate it. Right. We've been talking a while. An exposed locust point. A large frozen opportunity to rest powerful strands of magic from these beasts. Strands take considerable effort and focus on Bryn's part to harvest. Hold Y to pull all the strands until you're rip free. Harvest any great arc for a fresh Archon resonance. अब मैं बाद में करूँगा ग्रेट आर्क. ये क्या बता रहा है? Interdiction. I am simply telling you, as the foremost leader of the Enclave, that I don't... Can you clarify what you mean by that? You know exactly what I mean. Eyes down, know your place. Focus on your own problems. Organize your little craftspeople. Keep the wheels of civilized society, and don't dare to presume you know better than me. If you have a problem with my performance, you are welcome to gather feedback from the people who elected me. They may have a clearer understanding of what I bring to the table. We'll continue this conversation later. Hirun, Karnatme, allow me to formally introduce you to Bryn, the Weaver Band's point. You're the Axel, right? Arakim says you're a good person. I am. My given name is Harun, as Arakim said, but you may refer to me as Khan Arteme. It's a pleasure to make your acquaintance. Despite the circumstances, the new Surgeborn threat requires us to realign our priorities. If there's anything we can do to move things along. What about the supply shortage? I've seen her in What's her help look like? I'd prefer if she could avoid We didn't bring a lot with us, but if there's anything we can provide to you, our quarter a decade working the maiden shipping lanes turned her hard as cans. She sounds lovely. But unfortunately, we're supplying 10,000 people, not 7 weavers and their pack beasts, and I doubt you'd have enough on your caravan to make much of a difference. Fortunately, there's a silver lining to your Surgeborn mess that could solve the problem. Count me in. Right. With the Surgeborn unleashed, we're anticipating casualties and damage to our facilities. However, there's a restricted area in the underworks that we lost, an arcane laboratory where the Enclave conducted its enchantment research. Inside the Institute lies a significant supply cache. Its contents will be if the notes the previous Axel left me are accurate, though. Of course. The Surgeborn secure territory by building structures. Akin to insect, the Institute is likely overrun with them, and has been for 20-odd years. So, the Surgeborn are a long-standing threat to the Enclave. I wish I were old enough to remember what it was like to live without the fear of the Surgeborn. As a child, I sat awake every night worrying about them. I'm sorry you went through that. Thank you. All the more reason to actually do something about the problem, instead of spending our lives cowering behind the walls of our glorious fortress. You'll hear no disagreement from me, now that the game board has been upended. Sounds like I need to clear any Surgeborn hives from the Institute. That'll thin them out enough that my scouts will be able to access the supply cache without much trouble. Now that Asylum is lifted, we should be able to access the loom gates in the Institute again. I'm going to trust you with this key swatch. It's been gathering dust for over 25 years. Only the Eye would let such a crucial resource sit there for that long. Yes. If we're clear on everything, I'll get back to work.
My list of obligations grows by the minute. Someone has to keep this goddamn fortress running. Need I remind you that your access to Cassidon's hold is I didn't mean to intrude. You would do well to mind yourself, newcomer, or risk losing the privilege of coming to Cassidon's. Better practice this speech. The heart of innovation known as the Institute is not accessible via the Loom Gate. Institute में ही है हमारा काम फिर next. Anyways, आज का हमने काफी खेल लिया भैया गेम ये वाला और हम क्विट टू मेन मेन्यू करेंगे एंड क्विट टू डेस्कटॉप करेंगे, सीधी सी बात, ठीक है ना। बहुत खेल लिया हमने ये वाला गेम आज के लिए। काफी मेजर पार्ट्स निकल गए गेम के। हालांकि मुझे पता नहीं है कि इतना लंबा गेम है और क्या है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। सही है, ये अच्छा गेम था, मेरा मूड सही है। मैं इतनी लेट तक जब के खेल रहे हैं फिर भी मतलब अच्छा था गेम। 2-3 बॉस भी हमने डिफीट किए अच्छे। गेम में कोई मतलब गलत वो नहीं है, सही है, मस्त। और इसी के साथ आज की हमारी स्ट्रीम एंड होती है। आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए एंजॉय, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, सी यू, सायोनारा।